हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और मेरे साथ हैं उस्मान समीउद्दीन। और आज एक निहायत ही हैरानकुन टेस्ट मैच का नतीजा बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में मैं कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हार गया, और वो भी 5 दिन मुकम्मल होने से पहले। पता नहीं, मतलब आई थिंक शायद एटलीस्ट 21वीं सदी की टेस्ट तारीख में सबसे शॉकिंग रिजल्ट मैं कहूँगा इस मैच को। उस्मान, आपको कैसा ये सदमा या ये, आई थिंक इट्स नॉट इवन लाइक आई एम नॉट इवन सैड, इट्स जस्ट सो सरप्राइजिंग फॉर पाकिस्तान टू लूज इन ऑस्ट्रेलिया। या एंड लाइक जिस तरह से वो 100 के अंदर 100 रन भी नहीं बने पर्थ में जहां पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, हिस्टोरिकली पाकिस्तानी बैटर्स इतना जो सक्सीड करते हैं पर्थ में, दे प्ले द बाउंस सो वेल। असद शफीक जैसे चैंपियंस हमारे पास, सऊद शकील, बाबर आजम, और आज अचानक से देखो यार 89 अगेंस्ट लाइक अ फेयरली अनफैंसीड ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक, राइट? कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड ठीक है, लाइक देयर गुड, but yeah, itna 89 all out. Like it was. I think it's like a blip, though. I think it's like a blip. पहला टेस्ट हारे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में. There's still 2 more tests to go. I'm pretty confident it's just a blip. Well, I let's hope so, क्योंकि I don't even know how to analyze a match that Pakistan loses in Australia. But anyways, Should we do this whole episode? Should do this whole episode in this tone. आई फील आई वाज गेटिंग, अब मैं Whole थक गया था episode. इससे ना कि ठीक है, कर लिया। कितने मिनट, 1.25 मिनट हो We're गए, not बहुत हो used to गया it. Those muscles need to exercise in our brain. Muscle memory है ही नहीं हमारा. खैर, तो आज आज सुबह उठने के बाद ही, मतलब एक तो था कि मुझे 100% यकीन था कि पाकिस्तान मैच हारेगा। मतलब ऑब्वियसली कल रात को 87 पे 2 थे ऑस्ट्रेलिया, और दे ऑलरेडी हैड अ बिग लीड। एंड एक बड़ी अच्छी बात वो दानियाल ने अपने जो ऐसे में लिखी थी कि भाई, अब पाकिस्तान ने 100 ओवर खेले थे। वो ही एक बहुत बड़ी बात थी, जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने भी कहा कि अगर आप मुझसे मैच से पहले कहते कि ऑस्ट्रेलिया इतने ओवर खेलता, पाकिस्तान 100 खेलता, मैं मान लेता। आई वुड हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट। सो तो उस पे फिर ये तनकीद करना कि नहीं यार, ये 4 रन या 5 रन की औसत पे नहीं खेल रहे थे, वो तो कम ऑन मैन, लाइक फॉर दैट्स अनरीजनेबल। तो ये तो यकीन था कि पाकिस्तान हारेगा ये मैच। बट जो पिच के साथ हो रहा था सुबह में, आई थिंक लाइक व्हेन आई टर्न्ड इट ऑन, तो उस वक्त उन्हें कंपाइलेशन दिखाई थी कि जी वो अनइवन बाउंस और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो हैं उनको मसले हो रहे हैं। तो वहीं से था कि यार ये तो मतलब कोई उम्मीद का मौका भी नहीं देगा आज का मैच। और फिर मुझे यही एक्चुअली खुशी हो रही थी, ओह शिट, मुझे खुशी हो रही थी कि भाई ये आज रात हमें मुझे बट्टा फास्ट करने को मिलेगा, जो लग रहा था कि मंडे को करने को मिलेगा। थोड़ा ज्यादा हार्डर डे टू काइंड schedule around. So I was like, awesome, awesome. We will get a chance to do this today. And like काफी जल्दी पाकिस्तान ने वो कर लिया। बट मतलब अगेन टू बी सीरियस, what would you criticize the Pakistani batting effort for? Yeah, one thing I want to say, I know like Shan ने post match में जब broadcaster से बात करी तो he said कि अगर किसी ने, वही जो तुम कह रहे थे कि किसी ने अगर मुझसे बोला होता कि हम लोग यहाँ 100 ओवर खेल लेते तो that would be like a win for us. तो मैं पिछली सीरीज, because I thought कि यार ये किस तरह की कमेंट है, because हम लोग जब से इस सीरीज को प्रीव्यू कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में, तो हमें तो हमेशा से लग रहा था कि यार बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है, बैटिंग को सक्सीड करना, जो भी आपका लेवल ऑफ सक्सेस है, दैट्स नॉट अ सरप्राइज। तो उसने जब कहा ना कि हमने 100 ओवर खेल लिए, मैं पिछली सीरीज को देख रहा हूँ जो 2019 में खेली थी पाकिस्तान ने, 2 टेस्ट की सीरीज थी, और वो बहुत ही घटिया सीरीज पाकिस्तान की थी, यानी दोनों मैचेस इनिंग से हारे थे, उसमें 3-3 विकेट ली थी पूरी सीरीज में। उसमें पाकिस्तान ने दोनों गेम्स में 84 प्लस ओवर्स दोनों बार खेले, 84 एंड 94 ओवर्स, लाइक नो, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान डिडंट सर्वाइव। और उनमें से एक डे नाइट टेस्ट था, आई थिंक, यस, एक डे नाइट टेस्ट था। तो ये कहना सिर्फ के यार हमने 100 ओवर बैटिंग कर ली, आई थिंक इट्स अ बिट disingenuous. I don't think it was, well, I'm not going to use that word because I don't think it was intentional, because शान ने मगर उस सीरीज में खेला भी था, मगर आई थिंक ये सिर्फ कहना कि यार हमारा मेन टारगेट था कि यहाँ 100 ओवर खेलने, नो, दैट्स, आई थिंक दैट्स इनकरेक्ट। ये कोई मेट्रिक नहीं है
कि आपकी बैटिंग की सक्सेस हुई है। ये जो उसने बाद में बोला शान ने, आई फाउंड मोर इंटरेस्टिंग, और फिर मोहम्मद हफीज ने भी प्रेसर में बोला इसके बारे में कि हमारे बैटर्स ने हमने जो प्लान्स दिए थे वो एग्जीक्यूट नहीं करे। वी कुड हैव गॉन एट अ हायर स्ट्राइक रेट, वी कुड हैव अटैक्ड मोर, वी कुड शोन मोर इंटेंट। दैट आई फील लाइक ओके, चलो ये एक जायज किस्म की क्रिटिसिज्म है, और उस पे आप आप एक असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई हमारे बैटर्स ने जितना अटैकिंग खेलना था नहीं खेला, विच इज फाइन। शान ने खुद भी कहा कि 60-70 रन और अगर हमारे बन जाते हैं उन 100 ओवर में, आई डोंट नो मैच कितना बदलता, लेकिन दिस अल्टीमेट लाइक काइंड ऑफ डिफीट की जो मार्जिन थी वो कम रहती। व्हाट एक्चुअली इज हिटिंग मी नाउ, अभी 2 मिनट पहले ये रिकॉर्ड करने से मुझे ये समझ में आया कि यार ये लोग एक्चुअली, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस पाकिस्तान की बैटिंग 100 के अंदर आउट हुई है टेस्ट मैच में। मुझे याद नहीं आ रहा था कि पिछली बार कब हुआ होगा। अभी मैं चेक करूंगा, बट like to be bowled out for 89, I know tough pitch, very very good bowling attack, but yeah, like do we expect this batting lineup to get out for like under 100? I don't know. That took me by kind of surprise. मुझे थोड़ा सा इसका शौक हुआ कि 100 के अंदर इन्हें नहीं आउट होना चाहिए था। आई 150 बना लो, 200 बना लो, आपको मैच वैसे ही हारना है, बट 100 के अंदर आउट होना The 30 ओवर में, Usman, I don't know, that feels like that is, you can't put a positive spin on that in any way whatsoever. we just had some technical issues, but I'm back now with headphones. उस्मान सुख, पर मैं पूछना ये चाह रहा था कि मुझे जो लगा था शान ने 100 ओवर वाली बात इसलिए की है क्योंकि पिछली दफा इतना आपका एक्सपीरियंस लाइनअप नहीं था। एटलीस्ट इस दफा तो इन आगा सलमान, साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक, you have guys who are obviously very very new to टेस्ट क्रिकेट, और उसके अलावा भी कि शान और बाबर, मतलब शान इन हिमसेल्फ उसका कोई बहुत बहुत शानदार record नहीं है. So, how much of an overlap was there with the last time around? So I was just looking at the side, and Shan is there, Babar is there, Rizwan is in the squad, he's not playing, and Shaheen. So basically, like 4 guys, 3 of whom were actually in this 11. Magar, okay, like the Like last batting 11. wise, so you Yeah. So batting wise, you had Azhar and Asad there, but you also had like Haris Suhail. You had a better batting line, but like experience. चलो सही है, पहली innings थी, या दूसरी innings थी for a lot of these guys, but it's a better batting lineup than that, yeah. Like this is like genuinely a fairly strong and good batting lineup. आप ऊपर ही से देख लें, इमाम है, Abdullah Shafiq is, I think, we have to acknowledge that, and I know I'm massively jinxing him here by saying that he is okay. I'll tone it down. Abdullah Shafiq पिछले कई सालों में काफी एक बेहतर ओपनर पाकिस्तान को मिला है, ठीक है ना, जो खेल सकता है। पिछले सालों में जो भी ओपनर आए जो खेल सकता है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर ऑफ कोर्स। आई थिंक देव वीकेंड देयर बैटिंग लाइनअप by not having Saifi, by not having Rizwan in there. I think Rizwan को इस लाइनअप में खेलना है। साउथ शकील, साउथ शकील का आज मुझे कोई कह रहा था कि साउथ शकील का फेमस रिकॉर्ड था कि उसने अपने पहले 7 या 8 टेस्ट में 50 मारी है, हर टेस्ट में एटलीस्ट एक 50 मारी है। तो आज वो रिकॉर्ड डाउनग्रेड हो गया कि इसने अपने पहले 9 टेस्ट में हर इनिंग्स में 20 मारे हैं एटलीस्ट। जो कि सर एवर्टन वीक्स का कोई रिकॉर्ड है, लाइक व्हिच इज जस्ट लाइक यार कहां, यानी 89 ऑल आउट में से आप यही सिर्फ करेंगे। एंड आई वाज लुकिंग एट द लास्ट टाइम पाकिस्तान वो बोल्ड for less than 100. चलो, take a guess. When was the last time Pakistan was bowled out in a test match for less than 100? तो I'm guessing कि ये पिछले साल नहीं हुआ, वरना ये हम guess नहीं कर रहे होते। और 2020 चला गया था कोविड में, and that's basically I want to say 2019 That's not bad actually. versus It's not bad. Versus भी बता दो, चलो versus भी बता दो। yeah, there was a big run of these, but I think it was a Yes. few years earlier, so I'm getting Yeah, confused. but that So I was want like, to say they played Australia then, right? So I want to say Australia. okay, so it was, they were 81 all out in 2017, April 2017, but this was misused last series ever together. So they were 81 all out against the bloody West Indies. Like they were chasing 106 and they were all out for 81, which is amazing. Like it's phenomenal. वो series फिर भी वो जीत गया था. But it's been a long time since I've seen this kind of
अजीब सा कोलैप्स, और ये कोलैप्स एक हद तक शॉकिंग भी था बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, बट एक हद तक ये भी था कि अच्छा हाँ ये लोग पर्थ में खेल रहे हैं, अच्छा हाँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियाज अटैक, अच्छा हाँ मे बी इट मेक्स सेंस, इट्स रियली लाइक डिसओरिएंटिंग कोलैप्स बिकॉज एंड में आपने जितनी भी कोशिश करी, आपने Yeah. बहुत कोशिश करी, मगर आप फिर भी 360 रन से हारे। देखिए, हमारी पॉडकास्ट और मेरे जो भी चंद फॉलोअर हैं वो गवाह हैं कि मैं कभी भी खुशी से गोरों और ऑस्ट्रेलियंस की तारीफ नहीं करूंगा, बट लाइक दिस अटैक मैन, मतलब वो जो बाबर वाला उन्होंने दिखाए जा रहे थे, जिस तरीके से उसको कमिंस ने सेट किया था, मतलब वो सेट किया था, बस वो एक ही वो शू बॉक्स कहे जा रहे थे, उसके अंदर लिटरली एक शू बॉक्स के साइज पे उसने हाँ सारी बॉलें कराई हैं। एंड मतलब यही होता है ना कि आपके पास जो एक जबरदस्त बॉलिंग अटैक है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से मुझे ब्रेक, राइट, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट कि उसने पहले लायन के स्पेल में 4 ओवर के बाद उसे हटा दिया था, क्योंकि लायन वाजंट लाइक a horseman of the apocalypse level bowler in that session. हाँ वापस बिल्कुल। जब उसके लाए तो लाइन में भी फिर क्योंकि उससे पहले होता कि वो हर it was insane and they were fielding really really well. I think फहीम अशरफ की जैसे आप मिसाल लें कि उसने 2 दफा स्टार्ट को हाँ मिडिल करके पोल किया है, या and both times like sure he could have placed it better but it was fielded really well. तो उस तरीके में तो, और एक तो ये था, और हाँ, और दूसरा कि जो आपको नजर आ रहा था कि पिच का क्या हाल है, कि पाकिस्तानी अटैक जिसपे again, like you have Shaheen Afridi who's having like a shocking game until you remember कि वही अब किसी ने ग्रुप पे शेयर किया था कि 2010 से जितने भी लोगों का डेब्यू हुआ है, he's bowled more balls than anyone. Like it's not इंटरनेशनल। even close, हाँ right? या तो वो लग रहा है कि वो बेचारा थक के खत्म हो रहा है, और फिर आपके पास दो बंदे हैं जिनका डेब्यू है, right? Yeah, they're both debutants, right? So, या you अगर वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को तंग कर रहे हैं इस पिच के ऊपर, तो फिर तो आपको पता था कि यही, एटलीस्ट मेरे लिए, एंड आई थिंक मे बी यही था कि मैंने खोला है और उन्होंने वो कंपाइलेशन दिखाई और फिर पाकिस्तान दिखाया, तो आई वाज जस्ट लाइक ओके या डूड, लाइक आई कांट इवन बी मैड एट दिस। बट ये वाकई में था, और ये एक एक्सेप्टेंस कुछ हद तक थी। एडम होलियोक जो somehow is Pakistan's batting coach on this tour, I'm not sure या what he's done. How did that happen? Who knows? Woohoo! Zaka Ashraf, इन्हें भी हायर कर दो, उन्हें भी हायर कर दो, मैं भी शायद हायर हो जाऊं कहीं पे यार, मुझे भी आप या बॉलिंग कोच बना दें, मैं भी जाके कुछ अपनी रिस्ट दिखाऊंगा वसीम भाई जैसे, योर रिस्ट इज लाइक दिस लॉन्ग, आई रेकन, या ऐसे but he said Hafiz hinted at it today, and I think Shan maybe did as well, that आप यानी किस लेवल पे आप अटैक करेंगे इस बॉलिंग को, जो जो स्पेल कमिंस ने वो जो एक ओवर बाबर को कराया था, उसमें मैं बस ये पूछना चाह रहा था, हमारे ग्रुप पे किसी ने कहा भी था कि यार थोड़ा इंटेंट दिखाते, थोड़ा तो बाबर ने इंटेंट दिखाई थी उस ओवर में बाय ट्राइंग टू टेक दैट सिंगल, व्हिच इफ यू रिमेंबर यू आल्सो मेंशनड साउथ शकील ने सिंगल नहीं लिया, व्हिच ही शुड हैव डन, और बाबर आउट गया, बट आप that type of ball at high 130s, early 140s, mid 140s, and they're not just going straight. वो पिच पे लैंड करके थोड़ी सी हिल रही हैं इधर, थोड़ी सी सीधी जा रही हैं, आप कैसे खेलेंगे वो बॉल? लाइक द बॉल दैट बाबर गॉट आउट टू, यू हैड टू प्ले, वो वैसी डिलीवरी नहीं थी जो पहले आप देखते थे 90s में कि पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ा इधर ऐसे होके खींच, दे आर बीइंग पुल्ड बाय द बॉल एंड एजिंग इट, सीधी सीधी बॉल स्टंप पे थी यार, मिडिल स्टंप पे स्ट्रेटन हो, ये यू कांट प्ले दैट, यू जस्ट हैव टू बी लकी। तो एक लेवल तक वो है कि जो और बैट, उसी 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 लेवल पे अब्दुल्ला शफीक जिस बॉल तो फर्स्ट विकेट टू फॉल, दैट वाज वेयर उसी वक्त फट गई थी कि भाई ये इस पे पहले क्या ओवर करेगा कोई, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू हिम, हाँ कि भाई ये फॉरवर्ड नहीं आ रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, ही प्लेड एज वेल एज ही कुड, इट वाज एन अनप्लेबल डिलीवरी जस्ट अबाउट। और उसके बाद वो पता नहीं कौन सा कमेंटेटर या किसी ने शायद लिखा था कि ये लोग इतनी कंसिस्टेंसी करा रहे होते हैं कि आपको लगता है कि जहां बॉल पड़ रही है वहां भी एक डिविट बनना शुरू हो गई, क्योंकि हाँ हर बॉल वहीं आके उधर ही गिर रह रही है, गया यार, दिस इज तो व्हाई उस पे आई गेस पिच डिफरेंटली, पिच का भी इसमें रोल था डेफिनेटली, जो हम लोग पहले दिन भी कहा था कि यार अगर खुरम शहजाद ऐसी सीम करा रहा है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा बाद में, सो उसका रोल था, बट दिस इज व्हाई इन हाइंडसाइट इफ यू लुक एट सम स्ट्रेचेस ऑफ इंग्लैंड्स बैटिंग दिस समर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दिस अटैक लायन नहीं था, बट दीज थ्री बॉलर्स, पास बॉल, इंग्लैंड जो बैस बॉल करी थी, यू कैन सी व्हाई शान मसूद वाज थिंकिंग यार इन्हें अटैक करना है,
Like, nobody ever tries to attack them. Maybe we should just go. So Pakistan didn't do it. And the best impression that Pakistan did of baseball was Shan Masood wearing the bucket hat, which actually really annoys the hell out of me, yaar. कि ये fashion stakes में हम क्यों copycatting कर रहे हैं? Like, what is this? Why are they copycatting on the fashion stakes, यार? अपनी own टोपी कोई बना दो, बलोच कैप पहन लो, ये bucket Um, hat पहनने का क्या फायदा है? क्या तुक है? yes, I agree, but I feel like एक हम दोनों की अब इस उम्र आ चुकी है कि कुछ ऐसे चीजें होंगी जिस पर हम बहुत शोर मचा रहे होंगे just because we're struggling to battle with our own mortality and the loss that accompanies life. So instead, we're getting mad at bucket hats. और इसी I feel it's a good segue for me to talk about the man who got his 500th wicket today, Nathan Lyon. Um, Go. तो अग, अगर पिछली किस्त आपने देखी हो तो उसपे मैंने काफी हैरानी दिखाई थी कि नेथन लाइन की 500 विकेट हो रही है और फिर अपनी वो होता है ना कि जब अगले आपके ऊपर से आ रहे होते हैं तो आप और ऊपर से आते हैं मैंने कहा so I just want to make that to have a little preamble that I genuinely अगर Nathan Lyon की 300 350 विकेट होती ना तो I would not have been surprised. Like I felt that was मेरे दिमाग में ये level था, which is 350 wickets is not a joke, right? Like so I definitely thought he was a great bowler. I definitely enjoyed watching him bowl, like बड़ा classical off spinner. हमेशा उसकी length बड़ी अच्छी होती है, which I feel is central to how he bowls well. खास तौर पे कि जिस जमाने में दूसरा पूसरा ये वो he has none of those such so it's really about just landing it in the right places over and over again. Lyon is a great bowler that way. 500 विकेटें ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ मतलब इस ग्लेन मैग्रा एंड शेन वॉर्न राइट सो लाइक आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं और जो आगे मैं मेरी और उस्मान की खुद इस पे बात हो चुकी है और मतलब ये कि like I know some of the things that you have to say about this and I think those are valid points and we can say those we can get to those but ये एक्चुअली जो मेरे इश्यूज इसमें हैं वो कुछ 2-3 साल से मैं क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूँ और आई थिंक जब आपको अक्सर मैं कहता हूँ क्रिकेट स्टूपिड है ये है वो है दीज आर द इश्यूज ये बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से मेरे क्रिकेट के साथ जो रिश्ता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है सो सबसे पहली बात नेथन लाइन ने 123 टेस्ट मैच खेले राइट जिसमें से 57 आर अगेंस्ट इंडिया और इंग्लैंड विच इज ऑलमोस्ट हाफ सबसे बड़ा जो मुझे मसला है क्योंकि क्रिकेट के साथ होता है क्योंकि आई थिंक 90s में पाकिस्तान वाज अ गुड टीम 80s में वाज लाइक द सेकंड बेस्ट टीम तो उस वक्त का हमें तब भी बेहतर और ज्यादा सीरीज मिलती थी और फिर जो वनडे सर्किट था शारजा में वो टोटली एशियन कोलैब और रन था तो हमें मैचेस बड़े देखने को मिलते थे तो दिस फीलिंग ऑफ लाइक कि वी आर इग्नोर्ड एंड टू द साइड ये मुझे कभी इतना इस पे मैं सोचता नहीं था 2008 के बाद से या दो जब भी नौ जो भी कहें जब से हम लोग आइसोलेट होना शुरू हुए उस वक्त से अब मुझे बहुत फील होता है क्योंकि आपका तो एक यही है कि यू लुक एट नेथन लायंस रिकॉर्ड उसका बाकी सारी टीमों के साथ मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ रिकॉर्ड होम इन अ वे इंडिया के खिलाफ हिज रिकॉर्ड इज क्रेजी like he has no more than 2 fivers or 3 fivers against every team but he has 9 against India he has 2 10-fers against India his record is pretty good and a lot of that record being good is he's played a lot of matches against India तो एक तो मुझे ये बहुत मिस कर रही थी क्योंकि नेथन लायन ने जो पाकिस्तान के खिलाफ उस यूएई वाले एरा में खेले थे so he didn't have great test matches and Pakistan won 3 out of those 4 by huge margins or in fact in the one of those matches जो दूसरा spinner था Holland like he has better figures than Lyon does again that doesn't mean Lyon's not a good bowler but यहाँ से आपको एक अंदाजा हो रहा है कि जिस टीम और वो मतलब that team went to number 1 like it was genuinely a really good team मगर उसके खिलाफ इसलिए मैचेस नहीं होते थे क्योंकि पैसे नहीं बनते थे तो like someone like Nathan Lyon जिसके लिए potentially एक बड़ी मुश्किल टीम होती खेलने को he didn't really have to play a lot against them which I know Usman's like उसकी गलती नहीं है but ये मतलब किसकी गलती वो बाद में डिस्कस करते हैं राइट बट लाइक उससे जो दूसरा पॉइंट यही आता है कि जब आप पाकिस्तान के खिलाफ आपने तो खेला नहीं पाकिस्तान की मिसाल में लेके आगे चल रहा हूँ और भी टीमें इसमें शामिल है बट ऑल्सो जब आप खेलते हैं पाकिस्तान से तो आप सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते हैं राइट तो लेट्स से लायन शुरू में अपने करियर के ही प्लेड 2 सीरीज 1 सीरीज अगेंस्ट अस और उस वक्त 5 मैच की सीरीज होती है और फुल मतलब टीम मिसबा जो अक्सर bowlers को धो देती थी and they had horrible kind of soul crushing kind of
bowling spells in that kind of conditions, क्योंकि वो सिर्फ मिसबा की genius नहीं थी, those conditions were really difficult to master. बहुत सारे bowlers हुए थे. अगर if he was a young bowler and played a 5 test match series, क्या पता वहीं पे उसका करियर खत्म हो चुका होता, right? Like because I feel this matters is because when you flip it, when you see a Pakistani जो सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो अभी असद शफीक भी रिटायर हुआ. He had a pretty similar length of career, but in terms of years, but not in terms of test matches. Yeah. और असद शफीक के पास मतलब वही था ना कि अगर वो फॉर्म में आता है तो 2 मैच बाद खत्म हो गई सीरीज. अगर वो फॉर्म में नहीं है तो उसके पास सिर्फ 2 मैचेस हैं उसको वो करने की. सो आपने कभी भी क्रिकेट वो खेल ही नहीं रहे at that level where everyone else is playing it, right? So you're constantly similarly अगर एक पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर है तो वो जिस एरा में लेथन लाइन खेल रहा है वो he can't be a test specialist, right? तो अब वो टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं है तो उसे वनडे में भी खेलना है. और इसकी मिसाल आप सईद अजमल की दे दें कि सईद अजमल दूसरा दूसरा की लीगैलिटी को अगर हम साइड पे रखें, उस जमाने में लीगल थी, वो करा रहा था, तो उस्मान आई थिंक यू रोट ऑन दिस कि उसके बाद उसको पाकिस्तान इतना खिला रही थी कि यू कुड सी कि हिज एक्शन केप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स, बिकॉज़ वो हर मैच में हर टेस्ट में बॉलिंग कराया जा रहा था, क्योंकि उसके पास ना ही ये फाइनेंशियली फीजिबल था, ना ही उसके बोर्ड के लिए फीजिबल था कि उसको आप एक टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट के बतौर रखें. तो ऑफ स्पिन जो वैसी एक डाइंग आर्ट है, उसमें अगर नेथन लाइन बेशक उसने बड़ी जबरदस्त काम किए हैं, बट उसकी एक वजह कि ही इज ओनली प्लेड 2 T20 Is and he's played 20 ODIs. Like he has just had red ball cricket and then he can go back to a domestic system जहां पे उसके पास again he can make a good living playing first class cricket. तो ये बातें इसलिए मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि यार ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अच्छा मेरी इतनी क्यों सड़ रही है. मैं सकलैन का करियर देख रहा था, प्लेड लाइक 9 years or something, 49 test और matches. उसमें 49 टेस्ट मैचेस. पाकिस्तान played 77 in that time. So it's not even कि अगर चलो वो सारे भी खेल लेता तो उसका वो कुछ नहीं होता. Same with like Ajmal, same with like a lot of, I feel Pakistan is actually really underrated for the number of world class spinners, or at least red ball spinners it was producing in the 21st century. But उन सब के ऊपर आपको नजर भी आ रहे हैं ये प्रेशर्स कि ये they can't develop as red ball specialists. तो अब अभी बड़ी सड़ती है कि भाई यहाँ पे लोग कहते हैं कि इनको डोमेस्टिक खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ. लाइक फर्स्ट के डोमेस्टिक पे वैसे ही उसकी अपनी कंडीशन पे हम बात कर चुके हैं और लिख चुके हैं, बट ऑल्सो के एंड अगेन कि वो डोमेस्टिक का अब आपने एक रैशनल सिस्टम खड़ा किया था कि 6 टीमें होंगी फिर से 18 हो गई. वो वैसे ही सक करता है, बट उसके बाद भी कि मतलब अब वो सिस्टम इज डिजाइन टू कीप यू डाउन, लाइक इट्स, आई मीन नो वन, एंड इट्स नॉट लाइक कि आज ये बात हुई है, 150 साल से क्रिकेट में चल रही है. बट अब हम ये बहस कर रहे थे कि भाई अगर नेथन लायन को नहीं है गोट तो फिर अच्छा तो मेसी भी नहीं है कि मेसी लीग में खेलता है, इसमें सिर्फ बारसा में ही जीतता है ये वो. एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज हेल्ड अगेंस्ट मेसी. सो इट पीपल डिड फील दैट, बट बी रियाल और बार्सा के पास ये ऑप्शन नहीं है कि अच्छा भाई अब हम ना बाकी सबसे नहीं खेल, हम दोनों एक दूसरे से ही खेलेंगे और जो जीतेगा वो चैंपियन होगा, और सब आर्टिकल्स हमारे बारे में होंगे सब एंड ऑफ द ईयर. एंड आई फील दिस इज क्योंकि इसकी एक बड़ी स्टूपिड चीज पे हम बहस कर रहे थे कि नेथन लायन गोट है या नहीं, बट एज समबडी हु राइट्स ऑन क्रिकेट फॉर अ लिविंग, लाइक ये मुझे बड़ी एक्यूटली अवेयर था ओवर द टाइम दैट आई हैव बीन एक्टिव कि हम लोग कॉन्स्टेंटली एक्टिविस्ट की तरह पाकिस्तानी अचीवमेंट या ये नॉट बिग थ्री की अचीवमेंट्स को आके लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं और गालियां पढ़ रहे हैं और सब ट्वीट्स कर रहे हैं. एंड इट्स जस्ट लाइक अगर एक लीग फॉर्मेट होता जिसमें हर टीम सबके खिलाफ 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलती और उसमें नेथन लायन आई एम श्योर फिर से 500 विकेट लेता और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 होती, बट देन एटलीस्ट आई कुड जस्ट से कि यार here's what we can do. What the hell can we do when like no one will play us? फिर आप क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे प्लेयर्स की क्या गलती है कि उनके, और एज अ फैन एक तो मुझे देखने के लिए मिलता है अगेन, मतलब आउट ऑफ आईसीसी वाज स्ट्रांग, देयर इज लाइक फीफा है वो, भाई आपका जंग चल रही नहीं चल रही है आप खेलेंगे एक दूसरे से. बड़ी मुश्किलों से फीफा कोई चीज कैंसिल करता है. आईसीसी इज अ यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन. तो 15 साल पहले लाइक द बिगेस्ट राइवलरी दैट वी हैव एज फैंस वाज जस्ट एंडेड, finished. And not that it was a very regular one to begin with, but it still existed. It had a multi-decade presence, and then it's like it's over. No one can say anything about it. No one can talk about it. तो फिर जब आप कहना चाहते हैं कि नहीं यार कि हमारा ये बॉलर फलाना बॉलर पीएसएल में से देखते हैं बड़ा अच्छा है ये वो है, तो वो बाकी सब डिसमिस करते हैं कि उसने एक मैच खेला था जिसमें उसने अच्छा नहीं किया था तो उसके डेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सो you don't have a seat at the table as a fan, as a team,
as you know, as a participant in a global sport. Like the only kind of वो है कि जब दिखाना होता है कि 1 billion people follow cricket तो उसमें हम शामिल हो रहे हैं, but in any other kind of consideration of cricket and its achievement और उसकी legacy, उसमें बाकी टीमों का नामो निशान नहीं है. तो यहाँ पे I think like that was what was जब मेरे अंदर सुलग रही थी कि Nathan Lyon obviously was representing all these things, right? कि उस पे अगर वो पाकिस्तान में पैदा होता with all the same skills, his career would have been nowhere near. And that's not just because कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया अमीर मुल्क है. Even if you standardized all of those issues just purely in the way the opportunities for Pakistan cricket team that exists within sport, legal, political issues side mein hata de, he could have never reached this number. And that Also, to me, also, then फिर मैम look. also, he in Pakistan cricket, he very definitely would not have been played in as many test matches as he has played in. He would not have been allowed to play. उसका अगर मैक्सिमम Yeah, सीलिंग 3 टेस्ट होता ना पाकिस्तान में, वो 40 से ज्यादा उसे खेलना ही नहीं था, because they would have dropped him, brought him back, dropped him back, dropped him. So those things are also important, and they're not like, they're structural issues as well, but they are also in the way cricket is played. You know, Lion played a couple of points I'll make. One, like, they call him goat almost as a joke. In that country also, they call him goat as a affectionate sledge, because there's only one goat spinner in that country, right? We all know who that is. Marhoom Shane Warne, greatest to have lived or whatever. एक तो थोड़ा सा वो है. The other thing, why, one other reason why I think he is a great. Like, there's no doubt in my mind about that. Greatest will, people will judge afterwards, but he's a great because he has operated mostly in a country. He's played about half his test matches in Australia, which is a country जहां ऑफ स्पिन की ऐसी की तैसी, यानी अल्लाह मैंने कह दिया कि यहाँ पे ऑफ स्पिन नहीं होगी, कोई ऑफ स्पिनर बनेगा नहीं. On those pitches, he has had to develop. Ashwin is a great spinner. Ashwin is a great off spinner. He's an unorthodox off spinner in how much he evolves his game, how different he is to your regular off spinner. मगर Lion is a regular off spinner जिसने अपने आप को चिप एंड चिजल करके थोड़ा सा चेंज करा है. बाउंस उसका ज्यादा आता है, उसकी आर्म रिलीज डिफरेंट है थोड़ी सी, yeah. गेट्स द स्पिन दैट ही गेट्स. ही इज मेड हिमसेल्फ अ वेरी वेरी गुड स्पिनर, almost unseen in Australian conditions. It's taken Ashwin a few tours to Australia to get right how to bowl as an off spinner on Australian pitches. ये दूसरी बात है कि he's done it in Australia. तीसरी बात ये है कि he's always played with really strong, as part of really strong bowling attacks. That works in his favor, but also works against him in that, कई बार ऐसा होता है कि उसे मौका ही नहीं मिलता है विकेट लेने का, राइट? बिकॉज आपके पेसर्स ने गेम खत्म कर दी है उस वक्त, बट दे ऑल्सो क्रिएट द प्रेशर फ्रॉम विच ही प्रॉफिट्स एज वेल. ये भी मैं मानता हूं बात. अल्टीमेटली यार, इतने सारे टेस्ट में ही स्टिल टेकिंग. मेरा एक ये बहुत ओल्ड स्कूल मेट्रिक है जो मैं मानता हूं, और ये मेट्रिक शुरू हुआ था वसीम अकरम की करियर देख के. वसीम अकरम की करियर, द क्रिकेटर में एक बार सवाल आया, इन दोस डेज स्टैट्स गुरु वाज जस्ट गुल हमीद भट्टी साहब जो जवाब देते थे. वो आप लेटर भेजते थे क्रिकेटर में, एंड गुल हमीद भट्टी यूज्ड टू गिव द आंसर्स अ मंथ लेटर और व्हाटएवर. Somebody asked him, can you please give me Wasim Akram's test career record to date? This was like, I don't know, must have been 1989, 90 in his career. So Wasim Akram had taken 37 wickets में 142 test matches. और I think भट्टी साहब ने एक line लिखी थी end में, that generally what we consider a good fast bowler is somebody who takes about 4 wickets per test match as a base level, and no doubting that Wasim will get there very soon. उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात फंस गई है कि यार, अगर आपको जनरली एक, you want to be regarded as one of the best fast bowlers or spinners around the world, any kind of bowler, आपको हर टेस्ट में 4 विकेट का एवरेज रखना है, कायम रखना है. Nathan Lyon is going at over 4 tests a wicket right now. By the way, Nathan Wasim is Lyon not. का मैंने Wasim Nathan Lyon का is मैंने not दो, going with 4 tests a wicket. we both know that, but what I wanted to bring up is कि मैं ये देख रहा था, I didn't know this, but like कल ही मैं देख रहा था कि and I was making some random calculations. So इसने पाकिस्तान और 2-3 और मुल्कों के खिलाफ he averages around 3.3 wickets a match, and against India he averages 4.9 wickets a match. Yeah. And again he's played a quarter of his test match against India, सबसे ज्यादा उन्हीं के खिलाफ खेला है वगैरह.
तो वहां पे ना मतलब वही मुझे बाद में ये कि आप जैसे कि अभी तो मैंने और आपने शेन वॉर्न देखा है, अपने लायन देखा है, फलाना ढिमकाना, तो अभी तो बहस नहीं है। बट 50-60 साल बाद जब आपके पास लाइक द सेम वे देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट आई ओनली एनकाउंटर्ड थ्रू डेटा सेट्स एंड मे बी अ फ्यू यूट्यूब क्लिप्स हियर एंड देयर, तो उसमें वही होगा कि मतलब जिन लोगों ने ज्यादा मैचेस खेले हैं, उनके पास ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो that the legacies that we create now, and let's say कि चलो गोट साइड पे रख दो ना, मगर तब भी ये कि भाई उसने 123 मैच तो खेल लिए ना, वो तो हमारे मुल्क देखो में इसकी किसी ने अमर, इसकी जो मतलब पूरे अल्टीमेट मुल्क ने ही लेगेसी नहीं खेले इतने साल से। लायन की जो अल्टीमेट लेगेसी होगी ना, वो ये होगी, वो जितने साल बाद भी देखो आप, वो ये होगी कि ये ऑस्ट्रेलिया का 5-6 स्पिनर्स में से एक बेहतरीन स्पिनर था। ये कभी कोई नहीं कहेगा कि ये ग्रेटेस्ट स्पिनर था एवर। नोबडी विल से दैट अबाउट नहीं नेथन। मगर मैं नहीं 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 वी नहीं ऑल नो दैट। सी द थिंग इज wait for our generation to die, right? So like 60 years from now, chat GPT पे आप डालते हैं जी who's the greatest off spinner of all time in test match, and like I'm assuming that chat GPT will look at like the fucking abundance of numbers out there rather than a few Gul Hamid Bhatti articles, दैट्स अ बिग and then give असम्पशन an टू मेक answer के हाँ जी एट जीपी। दैट्स अ बिग and, असम्पशन टू और मेक। फिर उसमें ये लिखा होगा जी सबसे ज्यादा विकेट्स इसने उठाई हैं, लोग मुरली को कहते हैं, उसके बाद जी ये है, फिर 10 करोड़ इंडियंस के नाम होंगे, क्योंकि सकलैन और अजमल ने तो कुल मिला के भी 100 टेस्ट मैच नहीं खेले, राइट? एंड ये तो सिर्फ मैं इनका लिए फिर रहा हूँ, और भी लोग होंगे जो काइंड ऑफ आर गेटिंग इग्नोर्ड दिस वे, श्रीलंकन मगर बॉलर्स, उनका नाम कल ही याद आया इसलिए था। रखेंगे, सकलैन और अजमल का नाम इसलिए याद रखेंगे लोग, हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज सकलैन ने दूसरा इजाद करा, सकलैन, एंड अजमल was चैट the best, apart from Murli, was the best proponent of the दूसरा, तो Chat like GPT, what is Dusra? Dusra was one of the several illegal and eventually criminal things introduced to world cricket by Pakistan. या फिर तो हमारा This, काम है ना पॉडकास्ट के थ्रू हम इंश्योर करें but कि we lost that सकलैन। battle. वो हमने बड़ा लड़ा था कि जी सकलैन और ये अजमल के टाइम पे we were both writing, और उसके बाद यही हुआ ना कि क्रैकडाउन हुआ, और पाकिस्तान में इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन हुआ दूसरा के खिलाफ, हाँ और हाँ। वो it's gone and it's seen as a dirty little But you secret know that you the can the tolerate it for a point little while. about the number of tests, you're completely right, और इसका starkest जो illustration है ना, Lyon is coming towards the end of his career, 123 टेस्ट मैचेस जितने भी उसने खेले हैं, दूसरे एंड पे ऑपोजिशन में अभी वो खेल नहीं रहा है, बट दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। अबरार अहमद हैज, यंग स्पिनर जो निकला है अभी सर्किट पे, हैज अ ग्रेट ब्रेकआउट सीजन, टफ पिचेस पे उसने विकेटें ली हैं, अच्छी बॉलिंग कराई है, 2 साल उसने मेहनत भी करी है कायद आजम ट्रॉफी में, उसके बाद से इसने ये आया है, 6 साल से आ रहा है, ही इज ऑलरेडी अंडरगॉन स्ट्रेस फ्रैक्चर्स द बैक। ये इसने सीरीज मिस करी है विद एन इंजरी, which there's speculation कि ऐसे इंजरी चल रही थी और ये नहीं बता रहा था because he wanted to keep playing for Pakistan, which goes to the point of कि भाई आपको खेलना जरूरी है, because otherwise if you're gone, you're gone. He's now going to miss this series, and if Pakistan don't play against Bangladesh next August, he's not playing another test match for like pretty much a year. ऑलरेडी इसकी करियर में इसका 1 साल का गैप आ गया जिसमें ये टेस्ट क्रिकेट खेलेगा नहीं। अगले साल जब टेस्ट होंगे तो ये कायद आजम ट्रॉफी नहीं खेलेगा, तो ही इज नॉट प्लेइंग 4-day क्रिकेट एनीवेयर टू काइंड ऑफ बी अप टू डेट। तो दैट पॉइंट इज very valid. It's very valid. What I'm saying is that point doesn't go against the craft of what Lyon does and the skill Yes, of yes, what Lyon yes. Well, I think इसलिए मैंने शुरू में माफी मांगी थी कि अगर आप सिर्फ पिछली वाली किस्त देखें तो clearly I was dismissing all of that, and it's entertainment, guys. does. I don't genuinely mean that. मगर I think कि मुझे इस पे जो इसका logical conclusion जिसमें मैं आना चाहता ना, तो अब ये है कि या तो अगले 60-70 साल तक भी हम पागल की तरह क्रिकेट फॉलो करते रहें और वही बिग थ्री आपस में खेल रहे हैं और हम खड़े हुए तालियां बजाते रहें, और I feel that's why if I'm growing up in this era instead of like the 90s, then very soon the PSL will be the most important thing that matters to me. Yeah, for Because Pakistan. that's happening on Pakistan's terms, Yeah. right? और वो उसमें ये नहीं हो रहा कि जी क्वेटा अब खेल ही नहीं रहा इस्लामाबाद से, Yeah. और मतलब ये सब जो यहाँ पे नहीं चल रहे, जो क्रिकेट का एक बुनियादी reality है that's existed for so long because of the fact that the cricket is a very small game played by former colonies, like in terms of number of countries, Yeah. it's all former colonies playing each other, right? तो वहां पे वो उस वजह से, बट जो भी वजूहत है, अब जो आगे लोग आते जा रहे हैं, and it's not just about like people say it's the format is the format. I don't
if there was a viable like मैंने कायदे आजम ट्रॉफी का कवर की थी जब ये 6 टीम टूर्नामेंट था and it had this हाँ, crazy final that KPK yeah. was I think swept the domestic season that year, but then Hassan Ali plays this like wild An innings, idea. um, and he's bowled really well in it as well. It was great. It was great television. It was great cricket. Hmm. और मैं यही सोच Yeah, रहा था कि मतलब you can sell this. Like Pakistan is a cricket crazy enough nation, or yeah, yeah. आप आराम से बिल्कुल. you have a legible tournament and well good production quality, you can sell this. Of course उसके बाद पीसीबी ने फिर से 18 टीमों का ऊट पटांग टूर्नामेंट रखवा दिया है, and I'm never going to be interested in like और अब SNGPL versus तो KRL. अब वो भी आ गया ना. अब तो ना सिर्फ कायदे आजम ट्रॉफी है, अब प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी है जो आज कल शुरू हुई है. प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रॉफी से SSGC सुई सदर्न गैस ने पुल्ड आउट देयर टीम बिकॉज दे वर लाइक यार, एंड राइटफुल रीजंस. देयर रीजन एक्चुअली दे पुट आउट अ स्टेटमेंट सेइंग कि भाई इकोनॉमी बड़े बुरे हाल में, हमें अपनी रिसोर्सेज डायरेक्ट करनी है जहां पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, which is to serve our customers or whatever. It's not to set up a cricket team and play, which is harsh on the cricket players, of course, but it also makes complete economic sense. Like, why would you? और ये tournament वापस लाया है, by the way. I know we blame Zaka Ashraf's administration for many things, and This is Najam rightly. Sethi. Then Najam Sethi brought this back, and there was no need for this tournament to come back. There really was no need. Well, the need whatsoever. was कि जब ये फॉर्मेट आता है तो आपके खांचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं by 3. The kind of power brokers, but it wasn't really. Najam Sethi doesn't give a shit about this. The people that Shakil Sheikh साहब के ऊपर अक्सर ये इल्जाम आता है, but whoever you want to blame for this, but there are people who have vested interest in having this style of a tournament, You right? can easily have the Qaid Azam Trophy as it was with maybe 8 teams. मैंने हमेशा माना है कि यार 6 टीम से ज्यादा होनी चाहिए. Maybe 8 teams you have in the Qaid Azam Trophy, and you can pay players now with the new rights deal with the ICC. You can pay them much more money than you ever pay. You can make that still. But the thing is, the 8 teams they have to make some kind of sense to audiences. Yeah. Like SNGPL and KRL and Falana, मतलब Funny ये and चीज, fun. this is a remnant of जब पाकिस्तान की socialized economy थी. उस टाइम पे जब हुकूमत चला रही थी इन चीजों को, so yeah, then आप भर्ती कर दिया लोगों को, उनको एक स्टाइपेंड भी मिल रहा है और वो खेल रहे हैं वो. The world, like Pakistan, has moved past that economic reality. वो तो Yeah. there was a lot of politics and behind the scenes stuff that was still allowing this system to persist. If, Can I if, just if, can I just tell you the teams in the President's Trophy? So there's SNGPL, who are giants. Ghani Glass. Imagine if Ghani Glass become like, no disrespect to Ghani Glass. I'm not. If I'm not wrong, I've heard this Ghani Glass, the guy who owns it, the Ye represents like this new class of entrepreneurs in Punjab who are now looking to move into politics by kind of uh, become donors basically in that sense. So this is fascinating. So there's Ghani Glass, there's PTV, which can't even manage its own archive but yet has a cricket team. There's State Bank Pakistan, there's WAPDA, and there's the Higher Education Commission, and of course Khan Research Labs. So you and I know some of these teams because हमने बहुत follow करी है cricket, बहुत दिनों से follow करी है. We know the names, but क्या incentive हो सकता है यार? किसी को भी क्या incentive हो सकता है ये matches देखने का? ये matches versus how easy it is कि अगर एक टीम का नाम है नॉर्दर्न सिंध या सेंट्रल पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, how easy it is to get behind it. Like that is the part which is like इतना गुस्सा आता है. और ये क्योंकि एक दफा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नजर आ गया था जब वो you're right कि ठीक है 6 टीम कायदे आजम ट्रॉफी ना हो, बट जो वो थी that was an amazing product जिसका मतलब उसका ये हाँ. और अनलाइक पीएसएल इसमें तो ये भी नहीं एक्सपेक्टेशन है कि फॉर्मर क्यों नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे. आप अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ एक बहुत लाइक कंपेटिटिव टूर्नामेंट, गुड प्लेयर्स, एंड यू फाइनली गिविंग ही. जो हम फिर से बात करें कि अभी जो मैं देख रहा था कि नेथन लायन की करियर के लिए जब आप पाकिस्तानी प्लेयर्स देखें, यू लुक एट द प्लेयर्स हु जब पाकिस्तान ने यूएई वाला स्पेल खेला तो obviously Yasir Khan was the big name, Yasir Shah was the big name as a spinner, but like someone like Bilal Asif,
राइट? अब बिलाल आसिफ का आफ्टर लाइक हैविंग सक्सेस इन टेस्ट मैच वो 10वीं पीएसएल में आने की कोशिश कर रहा था बस, वरना उसका वही करियर नहीं बनेगा। वो 4 टेस्ट मैच खेलेगा 3 साल में, और उसके बाद उसके मतलब व्हाई वुड ही फोकस ऑन बीइंग जस्ट रेड बॉल क्रिकेटर? अब अगेन अगर कायदे आजम ट्रॉफी में आप थोड़ा सा उससे रेवेन्यू आ रहा है तो शायद आप वहां कर लें, ठीक है, बट एंड अगेन वहां पे पीसीबी की गलती है उसमें, आईसीसी ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ नहीं कह रहा, बट अगर वो सब कर भी लेगा तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट इंक्रीजिंगली हैज वेरी लिटिल टू ऑफर, पर्टिकुलरली टू अ फैंडम लाइक पाकिस्तान, जो एक 100%. काफी बड़ी फैंडम है। हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही स्पोर्ट है, और आप जितना अगर पीएसएल वगैरह चढ़ता रहेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें कोई घास नहीं डाल रहा होगा, तो फिर आई डोंट थिंक फैंस विल कंटिन्यू गिविंग अ शिट अबाउट इट, and that sounds like pretty crazy for people who grew up with cricket in the formats that we saw it in. But I genuinely, you know, like as someone writing about it, it's also harder and harder to write about like, yeah, ye Kohli bada zabardast. I mean, I love Kohli, right? But Kohli never plays in the UAE, and so I mean, I'm sure he would have done really well there, but I would have loved to see that. And when I don't see that, and I know that team was number one, तो फिर मुझे थोड़ा तो अजीब लगता है कहते हुए कि यार ये लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ये वो, बट जो लोग इंग्लैंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से बातें कर रहे हैं वो उनको तो ये कभी भी फिक्र नहीं होती बोलने की, तो यू नो लाइक वो इंग्लैंड में हर 2 दिन बाद वो कहते थे ये ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम है, एंडी फ्लावर वाली भी, माइकल वॉन वाली भी, मतलब यू एंडी नो फ्लावर ऑस्ट्रेलिया, जीरो हारी थी यूएई में, इनफैक्ट हाँ जिसकी एग्जैक्टली टीम थी जीरो एग्जैक्टली हारी थी लाइक, यूएई में. I mean, the Vaughan team lost 2-0 in Pakistan back when we still hosted cricket, and the Strauss and Flower team loses 3-0 there. And, you know, it's not like उसके बाद हमें ज़्यादा टेस्ट मिलने लगे यूएई में. हम तब भी साइड पे ही रखा हुआ था सबने, और आप करते कराते गुजर गए वो साल, और यार अब आप वैसे वापस बिलाल आसिफ जिल्लत बहुत प्यारा में बोलर बैठे था, हैं. तुमने क्या याद दिला दी है. बहुत प्यारा बोलर था, लंबा बाउंस निकालता था, एक्शन अच्छा प्यारा सा था, गाता भी बहुत अच्छा था. दैट वाज द अदर स्किल वाज दैट ही Yeah, sang. He sang really well. he's a really sweet guy, Yeah, and I yeah, think the next year like he was, you know, he was, his main focus was कि मुझे पीएसएल का और टी20 का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. yeah, yeah. um, Because that's all you're going to that get. should और या not किस be पैसे कमाए 100%, मतलब कि ये नहीं. इनफैक्ट आप पागल ही होंगे अगर आप पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट खेलने तक का मौका मिल रहा है और आप रेड बॉल पे फोकस कर रहे हैं, लाइक हाँ बिकॉज बिल्कुल. अगेन लाइक ये रियलिटी हम अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं. दिस इज द ओनली वे पाकिस्तान में गरीब आदमी अमीर और इज्जतदार हो सकता है लीगली. This is like literally the only way the kind of background that a lot of 90% of your players have come from. और कोई तरीका नहीं है, शायद वो डकैती शकेती करके पैसे बना लें और फिर एमएनए बन जाए या कुछ, मगर लीगली दिस इज द ओनली वे टू डू इट. Yeah, yeah. Big jump in status and earnings and all वो क्रिकेट ही से आता है आपको, जहाँ पे नो हमने हमेशा कहा है कि यार जितनी भी करप्शन है गेम में, इनएफिशिएंसीज हैं, फिर भी ये सच है कि आपके पास इफ यू हैव अनडिनाइबल टैलेंट यू आर गोइंग टू कम आउट समवेयर. यू विल कम आउट. उसके बाद से शायद यू प्ले 1 टेस्ट, यू प्ले 10 टेस्ट, यू प्ले 100 टेस्ट. वेल नॉट 100 बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू प्ले 100 टेस्ट फॉर पाकिस्तान एनीमोर, Yeah. बट you come out and you play like 70 tests, like Asad Shafiq 77 test matches, and like you make something of yourself. But हमने ठीक ठाक Yeah. obituary लिख दी है. इसी शो में हमने I've ठीक ठाक obituary कर दी. कहाँ से हम शुरू करे थे? यार By being पापा के सिर्फ 77 टेस्ट हैं, सोचे, मतलब पापा ने ना ही ड्रग्स की, ना ही फिक्सिंग की, कुछ ना भी ही नहीं करा. इंजर हुआ, ना ही उसका, आई थिंक मिसबा के जाने के बाद एक अरसे में थोड़ा उसका फॉर्म काफी खराब हुआ था, बट उसके बाद भी उसने ओवल में 100 मारी थी. यार उसने ऑस्ट्रेलिया में कैबा में रन बनाए. Asad Shafiq has the longest consecutive stretch of test matches that any Pakistani has ever played ever. That's 72. And he still has only 77 tests in his entire career. उसने 10 साल 2011 से 9 साल 2011 से 2020 तक असद शफीक ने 72 टेस्ट मैचेस लगातार खेले हैं. जिस कोई पाकिस्तानी सेकंड वाज जावेद भाई ऑन 58 टेस्ट मैचेस. द हाईएस्ट अनब्रोकन स्ट्रेच ऑफ टेस्ट मैचेस एलिस्टर कुक इज लाइक 150. एलन बॉर्डर वाज 150 बैक इन द डे. तो इस तरह के, और इसकी एलन लंप बॉर्डर वाली तब भी एक इम्प्रेसिव थी, यस बिकॉज क्योंकि एक तो उतने टेस्ट नहीं थे. Yeah. But Asad Shafiq 72, that's it. Like that's nothing. 72 तो अभी और जब
यानी कोहली ने आई थिंक 2013 तक शायद 72 खेल लिए थे। उसे तो 10 साल हो गए। जो रूट ने अपने नहीं डेब्यू को 2 साल बाद 72 खेल लिए थे। यार, आप ये देखें तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह तब भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं। इंग्लैंड में ये बेस्ट जैसे लल्लू पंजू खिलाड़ियों के 50-60 टेस्ट है, बेस्टो के जिनको 100 मतलब वो टेस्ट होने खुद भी वाले कहते हैं हैं। कि बेस्टो के 100 टेस्ट होने वाले हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ जॉनी बेस्टो के कितने टेस्ट हैं। आई रियली नहीं यार, मैं नहीं। नीड ये फिर से लोग मुझे गालियां देंगे कि ये क्रिकेट देखता भी है या नहीं। मैं तो नहीं देखता, मैं अच्छा नहीं तुम देखता, मैं इसलिए नहीं देखता क्रिकेट। गेस करो कितने टेस्ट हैं बेस्टो के, जॉनी बेस्टो गेस लगा दो। देखो नहीं 94। 95 टेस्ट मैच 94। सर ऑन द हेड। Are you kidding? 95, dude. Yes, and he's averaging 37 in those 95. वाह। एंड अगेन ये कहने का मतलब नहीं कि बेस्ट तो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बट वो खुद कहेगा कि भाई मुझे अभी तक अपना टेस्ट में रोल और अंदाज, लाइक इसी एशेज सीरीज में बात हो रही थी कि हाँ आप मुझे समझ आ रहा है क्या मतलब। और बेस्टो बाय द वे बेस्टो की इंग्लैंड के स्टैंडर्ड से बड़ी इंटरप्टेड करियर है। उसने मिस करे हैं, he's यस been outside, एग्जैक्टली। आ गया। एग्जैक्टली। वो बेन वही मैं फोक्स कह रहा ना कि वो, like so if he had क्योंकि played every कुक, single test matches he would every single test match since his debut he would have been like 130 140 or something by now. भाई जैसे कुक था कि कुक एक अपनी उसकी जगह बनती थी, तो अगर बस ही जस्ट हैड टू शो अप, और इंग्लैंड के इतने मैच थे कि ऑब्वियसली उसके 150-200 हो गए, ठीक है। बट बेयरस्टो के तो यही था कि भाई वो टीम में है, फिर टीम से निकाल दिया है, फिर वो कभी बैटर है, फिर कभी कीपर भी है, ये लाइक उसका रोल नहीं उन्हें समझ आया, उसमें उसने 95 टेस्ट मैच खेल लिए तो यार। देख लो दैट्स अगला पाकिस्तानी कौन होगा जो 100 टेस्ट खेलेगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। नो वन, नो वन। आई मीन लिटरली नोबडी। who was the last to play 100 tests? Yunus? Azhar ended on 96. I think Azhar Ali ended MYK 4 has tests. 100. Huh? Yunus Khan must have 100, no? Yeah, Yunus Khan has over 100, only a little bit over Yeah. 100. Azhar Ali ended on 97. Imagine. बेस्टो तो ऐसे ही उसे चुन्नी में हरा देगा। लाइक बेस्टो के 95 ऑलरेडी हो गए, अजहर But अली अभी आप 97 देखेंगे Azhar and Asad were like just constantly, like they were undroppable players. मतलब ये भी नहीं है कि उनको वो नहीं, वो उनको जब भी पाकिस्तान मैच खेलना उन्हें खिलाएंगे। देखो, yes, Yunus is the last guy at या 118. या And then before that is like Salim, Malik, Wasim. Yunus who made his debut in 1999 before Yes, the exactly. century So started. nobody who debuts in this century for Pakistan has played 100 tests, and I don't think no one will. Not even close. Not even close. मिसबा ने मिसबा ने इतना कुछ करके like मिसबा is had such an impact on Pakistani cricket, such a massive impact on Pakistani cricket. 75 test matches. Bye. Goodbye. 75 तो यार this is like a Majid Khan kind of era record, कि माजिद खान ने भी इतने ही खेल लिए होंगे या जहीर अब्बास ने खेल लिए जब आप होंगे। समंदर के जहाज में बैठ के टेस्ट सीरीज खेलने जाते थे, वो लोग भी 75 खेल लेते थे। So this, I don't know how we have reached to this point from where we began, but No, here we are. because we reach this point, I would say कि हफ्ते के दिन मैं कराची के खूबसूरत साहिल पे था, like friends are there, family is there, people are having a good time, और मैं अपने फोन पे बैठा हुआ इमरान अहमद खान और उस्मान से बहस कर रहा हूँ कि नई गोट नहीं है लायन, भाड़ में गया लायन, और फिर ये लोग कह रहे नहीं ये क्या वो क्या, ये क्या वो क्या। और उस वक्त फिर उस्मान ने कहा कि भाई अगर तुम इतने नुक्से निकालोगे फिर तो क्रिकेट में किसी का भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। एंड आई वाज लाइक यस माय ब्रदर, दैट्स वेयर आई एम एट। लाइक कि मुझे तो जितना मैं सोचता हूँ क्रिकेट के बारे में, सोचता हूँ कि यार दिस इज बिकॉज अगेन इट स्टार्टेड विद लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंडिंग वसीम अकरम, राइट, कि ओ हाँ जी बुमराह बेहतर है, स्टार्क बेहतर है, फलाना ढिमकाना। एंड श्योर, मतलब ऑब्वियसली आई एम एन ओल्ड guy, so I will think that, but the numbers just, it's very difficult to make a valid comparison because again Wasim Akram's played 104 test matches yeah over 18 104 years. 104 Bumrah will Yeah. not play And 100. he, Bumrah will also not play 100. चले I वो तो इंडिया के अपने टेस्ट के साथ वो हुआ नहीं, बट ठीक है, लाइक आई मीन इट्स नॉट फ्रॉम द फैक्ट कि बुमराह अगर अपना पूरा करियर was a
first guy on the team, हाँ, then he will play 100 test matches तुम because वो नहीं India देख लो plays ना that many test matches. तुम ऑस्ट्रेलिया को हटा दो जहां इंजरीज हुई हैं थोड़ी कमिंस को इंजरी हो गई है हेजलवुड माइट नॉट प्ले स्टार्क बी इन एंड आउट राइट इंग्लैंड को देख लो अगेन England is actually the prime example of this. Jimmy Anderson and Stuart Broad. They've like I think Anderson has maybe played 1,500 Test matches or something. वो तो यानी 1888 से खेलता हुआ है. Right? I don't know how many he's got. Like he's in every test. He's going to India for a 5-test series this summer. Imagine this winter at this age, he's over 40. He is going to play. He's just played a 5-test Ashes series. वो सिर्फ 5 test और 5 test से move कर रहा है. He's now going to go to India and play a 5-test series in India. इनफैक्ट मैं ये भी कहने लगा था कि आई डोंट थिंक 21वीं सदी में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 5 टेस्ट सीरीज खेली. ने पाकिस्तान ने आखिरी 5-test सीरीज 92 में खेली है तो उसके बाद से कहां खेलेगा कोई 92 में 30 साल से ज्यादा हो गए. आई थॉट 96 वाली भी 96 भी 5 में 96 was 3 96 4 थी 3 एक 4-test खेली है पाकिस्तान ने किसके खिलाफ नहीं 4-test भी नहीं खेली. I mean, they played 2016 England is 4 test, no? 2016 वाली 4-test खेली थी. The Amir one, yeah. Yeah, and they made that, the number one, they made it a 2-all series, a great series, top series. But Yes. 92 के बाद से कोई 5-test सीरीज खेली नहीं है और कभी खेलेंगे भी नहीं. They will never play another 5-test series ever. As won't most sides. Like only 3 sides will play a 5-test series. And वहीं पे मुझे मतलब ना कि आई थिंक यहाँ पे मुझे क्रिकेट पे गुस्सा आने लगा था. अभी वही कि आपके इवन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज लाइक अ वेरी डिलेड काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है यार हमें कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा. बट वो भी उसमें आपको उनकी नीयत नजर आ रही है क्रिकेट के अंदर के. Sorry? It's a bad fit, right? Because what they're doing is, मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है चलो इट्स द बेस्ट ऑफ नथिंग बिकॉज और कुछ है नहीं मगर आप एक बहुत ही छोटे से स्वेटर को आप एक बहुत ही बड़े मोटे इंटरनेशनल कैलेंडर पे पहनाने की कोशिश कर रहे हो. इतना इल फिटिंग है कि यार इस कैलेंडर को हम इतना सा स्वेटर डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का लगाते हैं जिसमें 2 साल आपको सिर्फ 6 सीरीज खेलनी है. क्या आपकी टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट की हो सकती है, 5 टेस्ट की हो सकती है, 1 टेस्ट 2 टेस्ट की हो सकती है. क्या दैट्स नॉट अ लीग. आप कह सकते हैं कि लीग है और थोड़ी बहुत कैशे अब मिल रही है उसे कि चलो न्यूजीलैंड जीत गया पहला, ऑस्ट्रेलिया जीत गया दूसरा. लेकिन इन टाइम वी नो द 3 टीम्स दैट विल कंटेस्ट फॉर इट एसेंशियली. साउथ अफ्रीका को आप देखिए, साउथ अफ्रीका एंड उन 3 टीमों के पास ये भी इख्तियार है कि भाई अच्छा एज यू सेड कि यार वो आगे जाके हमें एक्चुअली हमारे पॉइंट्स कम हैं, ये कम है या वो कम है. आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड टेस्ट वर्क्स, बट what I do know is that the big 3 and India in particular will be able to influence how it is run for its own benefit. और ये कोई मतलब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये तो होता आ रहा है, right? ये तो मतलब I'm just describing what the status quo is. The reality of the तो game. या तो खैर ये काफी एक जबरदस्त कोशिश थी मेरी और उस्मान की कि आपको हम पाकिस्तान की खिलौनी शिकस्त से I think we should sign off कि अगर अगला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर तो ये this will rank as one of the biggest shocks of the 19th, 20th and 21st century. If Australia wins this series. I swear man, I've never rated Australia. But anyways, Nathan Lyon और उनके खानदान अगर ये शो देख रहा है तो I hope आपने हमारी माफी कबूल की है और आपने बाकियों की तरह सब्सक्राइब और लाइक भी किया है. But that's all from Usman and I. And सिर्फ आपकी, हमारी नहीं. मैं तो उसे गोट. सही बिल्कुल नहीं, सही बात की है कि नितिन भैया और आपके खानदान वाले के जो है मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और अगले टेस्ट में उम्मीद है आप और आपकी टीम पाकिस्तान को भी माफ कर देंगे और हमें मौका देंगे कुछ सेलिब्रेट करने का. But yeah, so that's when we'll be back, and hopefully you'll be as well. Take care. Yes. Bye bye.